returning back the early project Swadeshi story from MIT to in the desert land, I would say in Tonk, in Banasthali, and he created out there. Ina Shastri ma'am is down with flu. She was to be with us to grace this occasion. So with this great panel on the backdrop, जैसा कि House of Lords में होता है, the Lords, the IAS are there sitting on the backdrop, two IAS flanking the IAS, the intellectuals, academics and scholars. I would request Saroj ma'am to do the honors on behalf of Madam Ina Shastri, who could not be physically present with us, to present the Hiralal Shastri Stri Samriddhi Samman. And I would also request Madam Mala Chandrasekhar to flank her alongside to present these honors to a fantabulous set of women entrepreneurial platforms and individuals and so on and so forth. So Saroj ma'am and Mala ma'am, please from the dais, let the panel be remain seated over there. Yeah. So first and the foremost, we would really like to felicitate a very dynamic, from the Banasthali, reaching out to the public office, Madam Rama Nagar, the Honorable. So please be seated, please. Madam Rama Nagar, who is also the National Secretary of the Rashtriya Lokdal and ex-chairperson Muzaffarnagar Zilla Panchayat, on the recommendation of Professor Ina Shastri, for having bolstered the Stri Samriddhi question significantly, specifically by making her mark in a public office by becoming the chairperson of the Muzaffarnagar Zilla Panchayat. So Nari Vandan Adhigam se pehle हमारी Rama Nagar ji, she has been adorning the public office across the Harit Pradesh, the northern Uttar Pradesh. Yes. Thanks, sir. She's an ardent Banasthalite. We would also like to felicitate Dr. Sarika Gupta, who is the director of Greenathan Technologies Private Limited, for having bolstered the Stri Sambandhi question significantly. और बहुत ही सहज संयोग है पंत जी और हीरालाल शास्त्री जी का पुण्यतिथि एक ही दिन और Banasthali is enshrined in my heart, said Mahatma Gandhi in 1946. तो डॉक्टर सारिका गुप्ता को माला चंद्रशेखर मैम. Yes, ma'am. So please. Yes. I would also request Madam Sarojya and Mala ma'am to felicitate the CWEI, the Consortium of Women Entrepreneurs of India, led by Dr. Shashi Singh, for its immense contributions promoting women in small businesses for sustainable development on the firm intellectual, academic and scholarly foundations of gender specialization, thereby bolstering Stri Samriddhi. And Shashi ma'am, Shashi ma'am represents entire guild of women entrepreneurs across rural India, especially Uttarakhand, and very passionate, one of the very early forums, women specific to facilitate women entrepreneurship out there. I'm holding on to the torchbearer of Banasthali for a reason, because she has to be the showstopper somehow. We would now like to felicitate yet another Confederation of Women Entrepreneurs, COVE, for building a strong ecosystem of support for women entrepreneurs through the creation of a smart mix of women industrial estates, Spurti and micro clusters. Daycare centers, a very, very eminent component of daycare cluster centers, food-based training programs, fempreneurs, young COVE, etc. It's quite an ecosystem which is bolstering Stri Samriddhi down south. Ma'am has come all the way from Pune, I presume. Yes. Jaipur, yeah. Madam Nidhi Toshniwal. Yes, ma'am. So for a moment, if she wants to introduce me, request Madam Toshniwal to speak about it. Yeah.
thank you to Rethink India for making us part of this brilliant audience and Illuminati from across the globe. Here I would like to share, sir, because आप लोगों ने सबने IITs की इतनी बात की. My father was alumni of IIT Kharagpur, a batch of 1962. So it made me so proud to hear and talk, and he always shared that whatever life I have built, it is to my alma mater. Wherever I go, I get that respect because of me being an IITian. He went on to become a cement technocrat and built a lot of cement companies in India. So thank you so much. It made me very emotional to even be here. As far as COVE is concerned, COVE has been also what I would say now a 20-year-old organization which was started by 6 dynamic founder members. The eldest one now being in her late 70s. So we can imagine the type of entrepreneurship spirit which flows in COVE's veins. And I am so honored and proud that such an organization is now bringing a lot of change, and change through mentorship, creating entrepreneurs at grassroots levels and taking it forward. So thank you so much for giving us this opportunity. And I want to thank the entire Rethink team and all of you present here for giving COVE this honor. Thank you so much. I think I'm in a fix, but then I would retain the order. The National Institute of Transforming India is doing a phenomenal work out there. केवल नाम परिवर्तन नहीं हुआ है, पूरा स्वभाव और पूरा चरित्र बदल गया है. What kind of fantastic platforms and ecosystems what Niti Aayog is bringing about. We talked about CDAP, but Niti Aayog, the foremost policy think tank of Bharat, bringing about. We would like to felicitate the Niti Aayog's Women Entrepreneurship Platform with the Pandit Hiralal Shastri Stri Samriddhi Samman for the stupendous incorporation of the Trinity of Forces. IKS की भी बात यहाँ हुई है. Trinity of Forces as per the Indic Pantheon, as in Iksha Shakti, Jnana Shakti, Karma Shakti, as the foundational tenets emerging to be a transformative force in the entrepreneurial landscape, empowering Stri Shakti through a 360-degree support encompassing training and skilling, access to finance, market linkage, business support service, mentoring and networking, compliance and legal support. So, and this trinity of Ichcha Shakti, Jnana Shakti and Karma Shakti is put so very brilliantly right on their homepage as an ode to the Bharatiya Samriddhi Parampara. गणेश जी की हमारी रिद्धि और सिद्धि, उसी से समृद्धि प्राप्त है भारतवर्ष को सदा से. Madam Palmi Ghosh has come all the way from Niti Aayog's web, the Women Empowerment Platform. I would request Saruj ma'am and Mala ma'am. And we would really like to hear a few words about this lovely platform. Yes, ma'am. Thank you so much, Ritik, for this wonderful opportunity and to have WEP here and part of this wonderful event. It is really heartening to be recognized for this kind of work, and I speak on behalf of the Women Entrepreneurship Platform and the mission director, Ms. Anna Roy at Niti Aayog. She is really like the stalwart behind the Women Entrepreneurship Platform, the vision that it has. And I think I'm trying to channel my inner Anna Roy if I can. What she would say is we started off thinking very small, something like the thought process behind the platform was very small, that we want the ecosystem to work with women and not around women entrepreneurs. And if the Viksit Bharat goal is what we want to achieve, we cannot leave behind our women entrepreneurs, and we need to have the ecosystem enable women to come forward and take up entrepreneurship, which I think that is really aiming to do. And the web is not just a digital platform, it is also something like a physical coalition. We bring together
conveners. We bring together people and we bring together ecosystem partners from both public and private sector to foster women-led entrepreneurship in the country. And we are so honored to have this award and this recognition. So thank you. Thanks a lot, ma'am. खेल के मैदान में जो हमारा कंटिजेंट सबसे आगे चलता है, जिसको आगे रहने की परंपरा रही हो, उसको हम सबसे अंत में पंक्ति में बुलाते हैं. We would like to felicitate Dr. Sunita Budara ji, who has been Asian Marathon Champion and the Atlanta Olympics torch bearer from the Banasthali Vidyapith, and her striving in the sporting arena we would really like to felicitate her with Hiralal Shastri's Stri Samriddhi Samman on the recommendation of Madam Hina Shastri. And I will quickly request for a group photograph of all the Pandit Hiralal Shastri awardees just coming with Madam Saroj and Mala Chandrasekhar ma'am. Quickly, a group photograph quickly, then we will move on to the next. ये मैडम गले में डाल लो, ये राहुल गांधी की तरह से मोड़ के मत रखो। वो आ गया भाई, मोड़ के रखिएगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण I would say स्त्री समृद्धि उद्यमी in Dr. Darshana Vaghela Banka. Yes, ma'am. Very specific work she did while her doctorate at IIT Delhi. She is also being felicitated here for her path-breaking paper titled Women in Yes, ma'am. Leadership, Sambil. a scenario in Indian higher education sector, which brings to the fore a data-driven fact that higher education sector of India, despite having a women-friendly image, continues to be a male-dominant one, and that the number of women representing Indian institutions and universities at the Vice-Chancellor, Dean and Director positions is significantly low, alongside a deep dive into the understanding of possible reasons for such low women representation in leadership, bolstering the avenues for Stri Samriddhi. Quite a catchy one, quite a, I would say, but that is what the reality she has shown through data, hard data, and we have to depend upon such data analytics going forward to really have a suitable ecosystem all across. Thank you so much. It's a lovely paper to read on. Ma'am, please, thank you so much. Thank you so much, ma'am, for doing the honors. Hina Shastri ma'am would be really thankful that she has been represented by such worthy peers of hers. मैं रमानगर मैम से, क्योंकि वो बनस्थली के अलावा हरित प्रदेश को रिप्रेजेंट करती है, एक प्रकार से हरित प्रदेश की जो भावना रही इस देश में, not in the political sense but एक भावना के रूप में कि ये हमारा हरित प्रदेश है. We also curated something called on one spectrum of the artificial intelligence debate, there is a talk about the आध्यात्मिक intelligence of Bharat, but एक और जो dimension है, that is of the agrarian intelligence. कृषि प्रधान भारत देश रहा है, रहेगा. 70% of the population depends on subsistence agriculture. तो ऋषि और कृषि संस्कृति जो भारत की है, उसको मुखरित करने वाले हमारे चौधरी चरण सिंह जी, उनके नाम से चौधरी चरण सिंह कमेंडेशन, furthering agrarian intelligence in the age of AI, safeguarding Bharatiya Samriddhi. The food security has to be safeguarded in an integral quartet. The rural intellectual he was accorded with, he gave just one address from the ramparts of the Lal Killa. और उन 5 मिनट में उनका एड्रेस अगर आप YouTube पे जाकर देखेंगे तो चौधरी साहब केवल 5 मिनट बोलते हैं और गागर में सागर भर देते हैं. एन आर्य समाजी, अ डिवाउट वन, और एक महात्मा जैसी फीलिंग, एन एमिनेंट गांधीयन फॉर दैट मैटर. और his legacy is thankfully being furthered and forwarded by his grandson, the MOS Education Jayant Chaudhary ji, whom we had a great good opportunity to interact at Mathura when he was the member of parliament from there. So we want to recognize the iHub Awadh, राम राज्य पुनर्स्थापना दिवस का द्वितीय अवसर है. अवध एक्रोनिम है एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब, and this is at IIT Ropar. On the way to Manali, we all go over there, and this iHub has done a phenomenal job in furthering the agrarian intelligence.
it is being recognized with Chaudhary Saab's award for his path-breaking set of 17 ready-to-be commercialized agrarian technologies, including but not limited to water quality monitor, soil spectra, digital entomologist device, carbon dioxide air sense, livestock monitoring device, Moo Sense 1.0, stubble removing device, multi-ponic system, automated desktop herbal garden, semi-automatic seeder machine, vegetable, pneumatic seed sowing machine, bricks and tiles from stubble. थोड़ा boring है, but I want to read it out that this is what this iHub has done, and it will transform the state of agriculture phenomenally. MoneyQ, Awadh DLE Gateway, Mappy Pro, energy efficient memory mapping for intermittent computing, Nano Aqua Nano Bubble Generator, NVM based architecture for intermittent computing, overlap detection via audio fingerprinting and deep learning. तो मैं चौधरी साहब की परंपरा से आती हूँ, बिकॉज राजनीतिक परंपरा की भी अपनी एक विशेषता होती है, विशिष्टता होती है, और मुजफ्फरनगर बढ़ौत वो जो केंद्र रहा किसान राजनीति का, और हम लोग रीजनल इंडिया पार्लेंस में कहते हैं एफडीआई का मतलब भाई फार्मर डोमिनेटेड इंडिया होना चाहिए. फॉरेन डोमिनेशन या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, वो परतंत्रता की निशानी है. तो मैं रमानगर मैम से निवेदन करूंगा कि वो iHub अवध IIT रोपड़ को सम्मानित करें जयंत जी के बिहाफ पर. मैम फ्रॉम देयर सेल्फ एंड द एंटायर पैनल कैन बी नमस्कार सभी को. मैं कुछ आपके साझा करना चाहूँगा कि शूलिनी यूनिवर्सिटी से खोसला साहब यहाँ पे हैं. iHub अवध ने शूलिनी यूनिवर्सिटी में एक साइबर फिजिकल सिस्टम्स का बहुत अच्छा लैब बनाया है, और हमारी ये कोशिश है कि हम पूरे भारत में जाके इस काम को आगे बढ़ाएं. वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. इनफैक्ट हमारी जो CEO हैं एक लेडी हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा समृद्धि की टीम को और सभी विशिष्टजनों को कि उन्होंने हमें इस सम्मान से नवाजा. सर प्लीज फ्रॉम रमा मैम. This sabha to stand up over and over again. अब दो विशिष्ट हमारे सम्मान जो हम आज हीरालाल शास्त्री जी की पुण्यतिथि के पश्चात प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत, और एक बड़ा सुंदर इतिहास में आपको कहना चाहूँगा. वह हमारे हरिवंश राय जी के बड़े घनिष्ठ मित्र रहे, और जो युग नायक सिने जगत के युग नायक का ओरिजिनल नाम सुमित्रा नंदन पंत जी ने दिया इंकलाब बच्चन, which became Amitabh Bachchan later on. So he was the one who gave name to the real star over there. तो कौसानी की जो धरती रही, जो महात्मा गांधी से भी जुड़ी रही, जहाँ उन्होंने अनासक्ति योग की, जहाँ उन्होंने 7 deadly sins के बारे में भी बात कही, मोरालिटी की बात बहुत गहरे से गांधी जी कहते हैं वहाँ पर कुमाऊं के प्रवास में. तो सुमित्रा नंदन पंत जी की जो जन्म जयंती स्थली रही, तो मानव हित साधक और प्रकृति परक, ये बातें अश्विनी महाजन सर ने भी कहा कि the triple bottom line what we talk about in economic development, समृद्धि ऐसी नहीं चाहिए कि बंजर कर दो धरती को, तोड़ डालो पहाड़ों को. समृद्धि ऐसी चाहिए जो प्रकृति परक हो और मानव हित साधक हो. ये जो दो डिमेंशंस हैं, दो महानुभाव हमारे ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञान से संपृक्त प्रोफेसर प्रीतम बाबू शर्मा, प्रोफेसर PV शर्मा in the popular parlance, we would wait for his so I will request so let me read out the citation उनकी शान में, because सर की तो कितनी भी तारीफ की जाए. और आज जो ये बावनवी संस्कृति बन रही है कि हम ही खा जाएं, the 1%er thought, I think प्रोफेसर PV शर्मा भारत के मंच से विश्व को नाद दे रहे हैं कि भाई ग्लोबल ह्यूमैनिटी की बात, वसुधैव कुटुंबकम का जो नाद MIT गुड़गांव के, गुरुग्राम के, और प्रोफेसर शर्मा doesn't need any introduction. He is the founding Kulpati of the Delhi Technological University. He was the former Kulpati of the RGPV Bhopal, former president of Association of Indian Universities in 2017-18, and currently the Kulpati of MIT University Gurgaon. And
ये जो कविता हम यहाँ पढ़ना चाहते हैं, आप देख पाते हैं पंत जी के पीछे बहुत महत्वपूर्ण है। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, झूठे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिट जावें जिसमें अखिल व्यक्ति, दिश दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिर मुदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नव जीवन का विहान। तो पंत जी की युगांतरकारी जो परंपरा है, मैं निवेदन करूंगा आलोक रंजन सर से, और एक बहुत ही विशिष्ट हमारी अतिथि आई हैं पंत जी की ही लिगेसी से, हमारी मैडम डॉक्टर वसुधा पंत, कि वो भी जुड़े इस सम्मान को देने में, क्योंकि पंत जी की जो लिगेसी है वह जितनी गाई जानी चाहिए। उनका एक कविता है, प्रकृति कितना देती है। आई थिंक इन टुडेज ट्रबल टाइम्स when we have to balance the triple bottom line, I think Pant ji's poetry is so very important. So Professor P.V. Sharma, and we have like the Acharya Jagdish Chandra Basu, we are recognizing him as the Acharya, because आचरण करके जो सिखाए वही आचार्य है। प्रोफेस ना करे, जो आचरण करे। तो आचार्य प्रीतम बाबू शर्मा पर for his differentiated aspiration and sustained striving for the humane advancement of esteemed disciplines. Professor Sharma is perhaps the only one in contemporary times who talks about science and spirituality. He is the one who indoctrinated Madame Curie, the only one who got twice Nobel Prizes in physics and chemistry. वो कहती हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी के समागम की बात। आज दानवीयता बढ़ रही है, आज आसुरित्व बढ़ रहा है। प्रोफेसर शर्मा carries that lineage. The humane advancement of esteemed disciplines anchored into the triumphant triad of Gyan, Vigyan and Pragyan, whereby he tends to amplify the advocacy of instilling a great sense of responsibility and purpose in the university system, what Kuladipati Kumar Vijayendra sir also talked about it, to make them the guardians of global humanity and sustain them as the sovereign engines of curiosity and translational research, to strengthen the resolve of creating a bright and blissful future for the global humanity. तो मैं प्रोफेसर पीवी शर्मा सर से निवेदन करूंगा कि वो आलोक रंजन सर और मैं वसुधा पंत मैम दोनों के हस्तकमलों से यह स्वीकार करें। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत उद्यम प्रशस्ति। हाँ इधर आ जाओ मैडम, इधर मैडम सर के पास आ जाओ, सर को बीच में ले लो। आप बात कर लो। इसी क्रम में हमारे दूसरे प्रोफेसर पीवी शर्मा सर का वक्तव्य हम सुनेंगे थोड़े समय में ही। मानव हित साधक की बात तो प्रोफेसर पीवी शर्मा ने कही, पर प्रकृति परक जो कि आज एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस की हम बात कर रहे हैं, वी वुड लाइक टू बेस्टो अपॉन आचार्य राकेश कुमार खंडाल सर, द फॉर्मर कुलपति ऑफ उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, डायरेक्टर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, प्रीमियर ग्रीन इनोवेशंस लिमिटेड. And sir is quite, I think, one of the very few Kulpatis across who straddles between industry and academia seamlessly well. जैसे DNA के दो strands होते हैं, sir keeps on toddling और this gives him a unique perspective about the state of affairs. और अगर हम ग्राफ 4 के संदर्भ में जो बातें कहें, जहाँ पे पूरा भारतवर्ष आंदोलित हो गया, भैया क्या घबराहट हो गई, प्रोफेसर खंडाल गिव्स अ वेरी सिंपल एकेडमिक आचार्य जैसा जो आंसर है, जो आपने कहा आई एम फॉरगेटिंग कि बिना मैप के आप लंदन नहीं जा सकते हो,
हमारे खंडाल साहब ने बहुत छोटे में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया। आई वुड लाइक टू रीड आउट हिज सोल्यूशन। उनका डस्ट बहुत है इस दिल्ली में, सफाई नहीं होती, पेरिस की सड़कें धुलती हैं, हमारे यहाँ तो धूल भरी रहती है। हमारी डिजिटल से पहले तो फाइलों में धूल जमा रहती थी, आधा किलो। आई थिंक आलोक रंजन सर would vouch for that. For his unabated and objective solution-centric commentaries and action plans pertaining to a differentiated Indic industrial environmentalism in an integral, intertwined manner anchored into Indic's intellectualism, encompassing, I'm reading the hashtags what Acharya Khandal has been furthering: self-sustainability, horticulture, PUCC for roads, dust-free roads, AQI, PM 2.5, biorefinery, petro-refinery, net zero, fire, Agni, plantation, responsibility, pollution, monitoring, indoors, outdoors, dirty, polluted, green periphery. And he is someone who practices what he professes, and that's why we recognize him as Acharya Rakesh Kumar Khandal sir. I would request again Alok Ranjan sir, because UP का नाता है तो एक परस्पर प्रीति है। सुमित्रा नंदन पंत, राघव जी आप ऊपर आ जाना प्लीज। आई वांट अ पिक्चर विद यू, यू नो प्लीज। राघव इधर आइए आप। राघव जी ऊपर आ जाओ सर, आप हाथ लगा दो ना सर। यस सर। राघव थैंक यू। थैंक यू सो मच राघव जी, थैंक यू। राघव जी मैं करता हूँ। मैं आलोक सर से निवेदन करूंगा कि वो बीच में आ जाएं सर। और मैं निवेदन करूंगा अनिल अग्रवाल सर को कि he also joins us on the dais. थैंक यू राघव जी। सर जयराम जी, जयराम जी। we have a very special set of commemoration now, which was instituted in the name of yet another great entrepreneur of the country, Ratan Tata. Ratan Tata tribute for being a socially innovative enterprise. हम लोग बात कर रहे थे शुरुआत में कि भारत में दो एंटरप्रेन्योर धाराएं रही, एक धीरूभाई अंबानी की जो कि इनफॉर्मल सेक्टर से आके उन्होंने समृद्धि की सीमाएं प्राप्त करी, ऊंचाइयां प्राप्त करी, एंड हार्वर्ड ग्रेजुएटेड, कॉर्नेल ग्रेजुएटेड आर्किटेक्ट इन रतन टाटा ओवर हियर. सोशली इनोवेटिव एंटरप्राइज जो कि मानव हित साधक और प्रकृति परक जो भावनाएं हैं कि समाज के लिए उसका उपयोग होना चाहिए. रतन टाटा वाज एन एग्जांपलर फॉर दैट. Examples like Tata Nano, the kind of innovations he could architect solutions in a big way. So first and foremost, we would really like to felicitate the Shobhit University Gangor Meerut to be a socially innovative enterprise. एक और बात है कि कहीं ना कहीं एक मानस परिवर्तन करना पड़ेगा कि the enterprise of education, the private universities, the deemed to be universities, जो self-financed universities हैं, they have to be seen as socially innovative, socially informed enterprises in their own right. मैं निवेदन करूंगा चांसलर कुंवर शेखर विजेंद्र जी से कि वो ये सम्मान इस मंच से स्वीकार करें. We have Alok Ranjan sir to present this felicitation on Kunwar Vijendra sir. Yes sir. घोसला साहब भी आ गए हैं. देश की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़ी यूनिवर्सिटी आपने बनाई है. देवभूमि उत्तराखंड से एक ऐसा ही सोशली इनोवेटिव एंटरप्राइज उभर कर आया है जिसने सोशल बिजनेस की एक परंपरा और फार्मर्स के क्राइसिस का एक बड़ा सुंदर सोल्यूशन
प्रस्तुत किया है from a managerial perspective. Alok Ranjan sir really appreciate that, and this solution really needs to be expanded, exponentiated, and brought into the policy framework. We would like to recognize the FFT Himalayan Fresh Produce led by Shri Lakshmi Prakash Semwal ji for emerging as a uniquely placed farmer-led company, whereby farmer organizations are equal business partners with private sector partners.